Today we are going to talk about the clinical part of bronchial asthma. Now, asthma, we know about it, right? It's a condition, obstructive condition, which is causing bronchospasm. That could be either because of allergy or it could be because of any kind of inflammation which is happening in the lung tissue. So mainly it's a chronic disease. It happens every year. The patient who is suffering with asthma, they will be having this issue every year, and that could be seasonal. So when you see it is present worldwide, it affects the 25 million people in US. Same way in India also, you will find many people who is suffering with the asthma. Even whether it is whether they are kids or adult or elderly people, that you will find many people who is suffering with the asthma. So when you see about the asthma, it's a chronic disease affecting worldwide, and it's a complex disorder which involves airway inflammation, intermittent airway obstruction, and bronchial hyperresponsiveness. So generally, we all have uh, responsive airway. Okay, because of any kind of allergen, we will have certain kind of inflammatory reaction happening in your lung tissue. But people with asthma, that the lung tissue will be more activated, they will be more hyper responsive, and that hyper responsiveness in the terms of the bronchospasm or increase in the sputum production. So you'll find both kind of symptoms in the patient with asthma. Because of this inflammation, they will be having acute, subacute, or chronic changes. They will be having presence of airway edema, mucus secretion will be the increased amount of mucus secretion. These all things will give rise to bronchial obstruction, airway obstruction, and bronchial reactivity. So all these kind of changes you will find in the patient who is having bronchial asthma. And at the same time, there will be varying degrees of mononuclear cell eosinophil infiltration. So mononuclear cells means there will be increased amount of mononuclear cells, which is a type of your inflammatory cells. The amount will be more. Eosinophil infiltration will be more, which is a type of WBC. So you'll find more number of eosinophil, mucus hypersecretion. Now we have type 1 pneumocyte and type 2 pneumocyte. Type 2 pneumocytes is responsible. Type 1 and type 2 pneumocytes, they are present in your lung tissue, and they are present in your lung tissue, and they are responsible for this type 1 and type 2 pneumocytes. So type 2 pneumocytes is responsible for surfactant production, and type 2 pneumocyte is responsible for sputum production. So all these things will be seen when you find a patient with asthma in their inflammatory changes, whatever is happening. The type 1 pneumocytes will be having more action. It will be more active, and all these things can give rise to increase in the sputum production. Then you will find disclamation of epithelium. The epithelial lining of the bronchial tissue, the bronchial lining or bronchial tree, will be broken up. Okay, they will be breaking up. So disclamation will be fine. There will be hyperplasia of the smooth muscle. Now, smooth muscle is present in your airway. They will get hyperplasia. So, increase in the size of those bronchial cells, and see all these things, and at the same time airway remodeling. So because of these all kind of inflammatory changes, the airway structures will be uh, having changes. So these all things will be will be seen in patient with the bronchial asthma. Now asthma will be of two types. Generally, it is of two types: atopic asthma and non-atopic asthma. Atopic asthma will be uh, having the hereditary predisposition. Non-atopic will be having it doesn't have a hereditary predisposition. So atopic will be seen in the younger age, in the kids, while the non-atopic will be seen in the elderly people. Atopic will be having the family history. So either father or mother will be suffering with the asthma or either airway hyperresponsiveness. Non-atopic will not be having this kind of issue. It happens because of allergic factor, yes, but it is like in the later in the age. It's not since childhood. It will be starting with the younger age. So this kind of changes will be seen either in atopic or non-atopic asthma. So now, if you see the pathophysiology, so in pathophysiology, mainly there is a role of inflammation. So inflammatory changes which is happening in the lung tissue, that is that's the main issue what we find over here.
So inflammation is increased, inflammatory changes is there. Then at the same time, there will be presence of allergic factor or environmental factor. This could be in the forms of pollen, dander, then dust particle, even dust mites. Those are the small insects that will be there. Then patient with the asthma who is having asthmatic response early in the life. Later on, they will be having changes like bronchiectasis. So, at a time of like in the younger age, in the childhood age, they will be suffering with the asthma. But as they will get elderly, they will be having bronchiectasis and those kind of changes. Then so the mainly the airway inflammation, intermittent airflow obstruction, bronchial hyperresponsiveness, these three inflammatory changes will be seen. These three pathophysiological changes will be seen. So airway inflammation is because of the presence of inflammatory cells, that mainly the eosinophil, then mucous hypersecretion, that is because of the type 1 pneumocytes, disclamation of the epithelium and smooth muscle hyperplasia. Then, if you see airflow obstruction is occurring because of smooth muscle uh, constriction, the bronchoconstriction. So, whenever the patient is getting exposed to the allergen, the smooth muscle will undergoes constriction, and that can give rise to airway obstruction. Then, at the same time, chronic mucus plug formation, the secretion production has been increased. So, increased secretion production will get dried up, and they will get settled inside the bronchioles. They will get settled inside the airway. So that can also give rise to airway obstruction, airway edema. Because of the inflammation within the airway, the presence of fluid will be there. So that airway edema will be seen. So all these things can give rise to airway bronchoconstriction or acute bronchoconstriction. And later on, if this thing is happening again and again, then that can develop a chronic changes in the form of epithelial disclamation. The epithelial cells, epithelial lining of your airway will get broken up. So this kind of changes will be seen. Even in asthma, if you see the pathophysiological changes, you will find presence of cytokines, interleukin, interleukin, that is IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, and IL-13. All those kind of inflammatory changes will be seen. All those kind of inflammatory markers will be seen. Then bronchial hyperresponsiveness generally when if we are standing in a dust atmosphere, we may not find breathing difficulty. But a patient who is having atopic asthma, that is hereditary asthma, their airway will be more responsive to those dust. Okay, so that can give rise to increase that can give rise to alveolar hypoventilation, that can give rise to uneven distribution of the air, that can give rise to vasoconstriction, and that vasoconstriction can cause alveolar hypoxia. So decrease in the oxygen level in the airway. All these things will be seen because of the bronchial hyperresponsiveness. Even many a time you may find a person with exercise-induced asthma. Yeah, exercise-induced hyper ventilation. Okay, so they don't have any kind of allergen factor, they don't have any kind of hereditary factor, but if they go for the exercise, they will develop this issue. They will develop asthmatic changes. So that is also nowadays that is happening. बहुत ज़्यादा हो रहा है. So all these kind of things can be seen when you find a patient who is having asthma. Now, what kind of presentation you will find, what kind of changes or what kind of assessment finding you will get. So that we'll see in the detailed part of your assessment thing. ये है पूरा assessment में. So now we'll move on to that assessment thing. के अंदर history और सब कुछ आ जाएगा. So pathophysiology, as what I had explained just now. So the first thing is history part. The subjective assessment, if you take, you will have to go for the name. Age, it can occur at any age, predominantly in the children below the age of 6 years. In very young person or very old person, they will get asthma. And two-thirds of the cases are diagnosed before the age of 18 years. Means one-third of the cases is happening after the age of 18 years. Gender-wise, if you see, predominantly, धीरे बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा है आप बहुत फास्ट जा रहे हो predominantly if you see,
It is occurring in boys in the childhood. So it doesn't mean that in female it doesn't occur. Male to female ratio, you'll find two cases in male, one case in female. So in the male gender, male sex, it is having more risk of developing asthma. Okay, until the age of puberty. After puberty, it will be the almost equal predisposition, that male and female will be having, both will be having equal predisposition. So asthma prevalence is greater in female after puberty, and the majority of the adult onset cases diagnosed in person older than 40 years of age. Up to the puberty age, boys will be more vulnerable to develop asthma. After that, females are more vulnerable to develop asthma. Lekin, again, if the male is having history of smoking, the adult male who is having history of smoking, they also have a higher risk of developing asthma along with other COPD conditions. See, asthma is not a part of COPD. It's not a part of COPD because asthma में acute changes होता है. लेकिन asthma, when it happens every year, then they will develop chronic changes. Okay, boys are more likely than girls to experience a decrease in symptoms by late adolescence. And after the adolescence, मतलब कि जब वो adult age में जाएगा तो उसके बाद मेल में ये रिस्क, उसके जो symptoms होते हैं, they will keep on reducing. Occupation, those who are working in industrialized location, they are in, or else the urbanization means those who are staying in an urban area, where the urban area, the city area is developing, where the construction is happening, like road, flyover, buildings, all those area. Air pollution, the area with the higher amount of air pollution. Passive smoking, suppose if somebody is smoking and you are standing beside, or in a family, if a male is smoking and the wife and kids are inhaling those smoke dust, then, and change in the exposure to environmental allergen. Suppose if you are staying in a city and suddenly you went in village during the spring time, जब बसंत होती है और आप गांव में जाते हो जहाँ पे सारे क्रॉप्स जो होते हैं, जो जो खेत में जो क्रॉप्स बनते हैं, तो दैट काइंड ऑफ एलर्जन चेंज, एनवायरमेंटल एलर्जन. इवन इफ यू सी, जैसे अभी वी वर हैविंग समर, बट सिंस 2 days देयर इज काइंड ऑफ ह्यूमिड एटमोसफियर. जैसे बारिश होगी, मैनी अस्थमेटिक पेशेंट विल डेवलप अस्थमा. या फिर इफ फ्रॉम मानसून टू winter, this kind of some seasonal changes, when it happens in those area, the this asthma will be having higher risk of development. Chief complaint, if you see, that will be difficult in the breathing during the strenuous activity or exercise. During exercise or rest, mainly the breathing difficulty is the most common symptom, and easy fatigability. The patient will be getting fatigued very easily. History of present illness, in that you have to go for the detailed medical history. Whether symptoms are attributable to asthma, like what all kind of symptoms are there, and those symptoms, whether it is uh, attributing to asthma, मतलब कि अस्थमा को रिप्रेजेंट करने वाले सिम्टम्स है कि नहीं, वो इवेल्युएट करो. whether finding support a likelihood of asthma, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री होना. In history of present illness, you ask patient whether in your family, your mother, father, or siblings, whether they are having asthma or not. Severity of asthma, how much severe it is, whether that's asthma which is happening to a patient, जिसकी वजह, जैसे कहते हो कि बच्चे में जनरली ये बच्चों में ये ज्यादा पूछा जाता है कि अगर जब बच्चे को अस्थमा अटैक आता है तो उसके बाद वो दूसरे दिन स्कूल जा पाता है कि नहीं. So suppose if a kid is having asthma और उसके बाद he or she is having increased number of school absenteeism, मतलब कि वो स्कूल से जब वो उसको छुट्टियां लेनी पड़ती है because of asthma, that shows that his or her asthma is severe. सेम वे अडल्ट में अगर अस्थमा के बाद उसको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है या फिर हॉस्पिटल में इमीडिएटली एडमिट करना पड़ रहा है, तो दैट शोज दैट दे आर हैविंग सीवियर अस्थमा. ऑन द अदर हैंड, इफ समबडी इज हैविंग अस्थमेटिक अटैक एंड ही हैज टेकन द मीटरडोज इनहेलर, उसने पंप ले लिया, उसके बाद उसको इतना सीवियर नहीं है, वो बाद में नॉर्मल हो जाता है, दैट शोज दैट इट्स नॉट दैट सीवियर. So it depends on the patient to patient what kind of severe asthmatic level they are having. Identification of the possible precipitating factor. What kind of precipitating factor? जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, जैसे कि आई डू नो फॉर माई सेल्फ कि जब भी सीजनल चेंजेस होता है, जैसे अभी बारिश होगी तो शुरुआत इट विल हैपन विथ मी इरिटेशन इन माय नेजल एरिया, आई गेट द इरिटेशन. उसके बाद मुझे राइनाइटिस हो जाता है. आई एम नॉट अस्थमेटिक बट आई गेट दिस राइनाइटिस.
So that is again the allergic factor. तो मेरा वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है कि इरिटेशन इन माय नेजल एरिया, इन द अपर नेजल एरिया, ये एक मेरे लिए हुआ. सेम वे इन asthmatic patient they will get this kind of irritation, they will get itching in the nose, and then they will get the breathing difficulty. So in that way, the precipitating factor, the patient, each and every patient, they will be having precipitating factor. किड्स होंगे, बच्चों को ये पता नहीं चलेगा, लेकिन अडल्ट में ये उनको पता होता है कि क्या शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है. So that you need to ask. The patient's exacerbation history is important. Now, exacerbation history. Suppose कोई patient who is having asthma, exacerbation of asthma, जब अस्थमा बहुत ही सीवियर हो जाता है, तब क्या क्या सिम्टम्स आता है. तो ये जनरली ऐसे पेशेंट में लिया जाता है जहाँ पे स्टेटस अस्थमेटिकस है. स्टेटस अस्थमेटिकस इज दैट काइंड ऑफ अस्थमा जहाँ पे 24 घंटे हो जाए फिर भी पेशेंट के अस्थमा में कोई सुधार नहीं आता और पेशेंट को बाद में एडमिट ही किया जाता है. दे नीड, अगर वो इवन कितना भी मीटर इनहेलर ले ले या फिर स्टीरॉइड ले ले, he won't be having any kind of improvement and those kind of patient need to get admitted immediately. तो वहां पे यूजुअली प्रोड्रोमल साइंस एंड सिम्टम्स, रैपिडिटी ऑफ ऑनसेट, रैपिडली बार बार अपीयर होना, एसोसिएटेड इलनेस विल बी देयर. नंबर इन द लास्ट ईयर, कितने बार लास्ट ईयर कितनी बार उसको अस्थमा का अटैक आया, नीड फॉर इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट, हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू एडमिशन और इंट्यूबेशन, कितनी बार उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, कितनी बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाना पड़ा, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, और कितनी बार इंट्यूबेट करना पड़ा मैकेनिकल वेंटिलेशन के साथ. Missed days from work or school or activity limitation. कितनी दफा patient has got absenteeism from his work, from his school, और कितनी कितनी बार उसकी activity limit हुई because of his asthma. These all things will be showing exacerbation symptom, exacerbation history. अगर ये सारी चीजें absent है, that shows that patient doesn't have exacerbating asthma, मतलब उसका asthma इतना severe नहीं है. लेकिन अगर इसमें से कोई भी symptoms अगर present है, so we can say that yes, their asthma is very severe one. Family history may be pertinent for asthma, allergy, sinusitis, rhinitis, eczema and nasal polyps. ये सारी कंडीशन जो होती है ना जनरली एटोपिक अस्थमा में दिखाई देता है कि जो बच्चों में अस्थमा होता है उनके फादर में या मदर में, जनरली फादर में, डजंट मीन कि मदर में नहीं होगा, दोनों में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर फादर में ये होता है कि इधर दैट फादर इज हैविंग अस्थमा या फिर दे आर हैविंग एलर्जिक फैक्टर, और एल्स दे हैव साइनसाइटिस, दे हैव राइनाइटिस, राइनाइटिस मतलब नाक में से पानी बहना, दे हैव एक्जिमा, एक्जिमा मतलब स्किन इचिंग, नेजल पॉलिप्स में नेजल एरिया के अंदर, नेजल के अंदर जो સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં બોલે તો પેલું નહીં કહેતું કે પડદા ખસી ગયા છે અને સાઇનસાઇટિસના ઓપરેશન કરવા પડતા હોય છે, તો that kind of thing કે they either have some kind of pimple kind of things, so that growth will be there which is obstructing airway in the nasal area. So all those things, all those history will be there in the family. Patient में भी हो सकता है और family में भी हो सकता है. सोशल हिस्ट्री में इंक्लूड होम कैरेक्टरिस्टिक, घर का माहौल कैसा है, डस्टी एटमोसफियर में घर है, क्लीनलीनेस है कि नहीं, घर के आसपास ये जैसे कि आईएलडी में, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में, होम कैरेक्टरिस्टिक में एक फैक्टर होता है कि पिजन्स, कबूतर. तो उसी तरह यहाँ पे किसी के घर के आसपास गार्डन है, फ्लावर्स है या एनिमल्स को बांधा हुआ है. स्मोकिंग, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस कौन से एरिया में है, स्कूल कैरेक्टरिस्टिक, एजुकेशनल लेवल, बंदे का खुद का एजुकेशनल लेवल कितना है, एम्प्लॉयमेंट, वेयर ही इज वर्किंग, वेदर ही इज वर्किंग इन अ डेस्क जॉब या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, social support, whether he or she is having social support, family support or not, factors they may contribute to non-adherence of asthma medication. अस्थमा की मेडिकेशन के साथ एडहेरेंस होना. अगर कोई पेशेंट who is having asthma, if he takes regularly beta blocker, that could be in the form of bronchodilator, beta, sorry, not beta blocker, beta blocker नहीं, beta agonist, वो रेगुलरली अगर ले प्रोफिलैक्टिकली, जैसे कि थियोफिलिन होता है वो प्रोफिलैक्टिकली दिया जाता है, तो वो लोग अपने अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, अस्थमा अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलर दवाई लेते ही नहीं, दे आर नॉट एडहेरेंट, वो एडहेरेंट नहीं है. तो ऐसा क्या फैक्टर है बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एडहेरेंट टू दैट मेडिकेशन, वो क्या फैक्टर है जिसकी वजह से वो लोग नहीं ले पाते, दैट यू नीड टू असेस. एंड इलिसिट ड्रग यूज,
कितनी ड्रग वो यूज करते हैं, ये ऑल थिंग्स नीड टू बी असेस इन योर हिस्ट्री. The patient's perception of his or her asthma is important regarding knowledge of asthma and treatment, use of medication, coping mechanism, family support, and economic resource. कि पेशेंट का खुद का परसेप्शन अपने डिसीज के लिए कैसा है, कि इफ यू गेट एन अस्थमेटिक पेशेंट वो खुद के लिए क्या सोचता है. अगर वो बोले कि हाँ भाई मुझे अस्थमा है बट आई हैव वेरी गुड फैमिली सपोर्ट, आई हैव गुड फाइनेंशियल सपोर्ट, मैं मेडिकेशन रेगुलरली यूज करता हूँ, मैं इकोनॉमिकल रिसोर्स है मेरे पास, मेडिक्लेम है जिसकी वजह से मुझे इतना बर्डन नहीं आता. कोपिंग मैकेनिज्म, अगर मैं अस्थमा होता है मुझे तो उसी टाइम पे मैं मेडिकेशन लेके मैं आराम करता हूँ या योगा करने लगता हूँ तो मुझे अच्छा हो जाता है. This kind of thing. On the other hand, if you find a patient who is not having financial support, who is not having family support, who is not having even coping mechanism, जैसे कि ऐसा बंदा है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे उसको डेस्क के बीच में ही काम करना पड़ता है, तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ही इज नॉट एजुकेटेड, उसको वही काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो कोपिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेगा. सो यू नीड टू आस्क whether is there any coping mechanism or not. In patients with exercise-induced bronchoconstriction, the clinical history findings are typical of asthma but are associated only with the exercise. जिन लोगों में एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन या एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है, दैट दे विल बी हैविंग सिम्टम्स ऑफ अस्थमा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और कभी भी उनको एलर्जिक फैक्टर सीजनल फैक्टर ये सब नहीं दिखता, सिर्फ जब वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तभी होगा. So during exercise, they will get cough, they will get wheezing. Wheezing मतलब कि not even without stethoscope also आप उसकी breathing सुन पाओगे without stethoscope. They will be having shortness of breath. They will be having chest pain or chest tightness. ये सारे symptoms exercise के साथ आते हैं. Some individuals also may report sore throat. ये जनरली जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होता है उसके बाद कई लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि दे गेट सोर थ्रोट, दैट शोज दैट यू हैड ओवर ट्रेन योरसेल्फ. तो ये होता है आफ्टर एक्सरसाइज, जनरली लोगों में एक्सरसाइज के बाद होता है, लेकिन ऐसे लोग जिन लोगों में एक्सरसाइज रिड्यूस अस्थमा है वहां पे उनको ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी हो जाता है, या जीआई अपसेट, उनको डायरिया हो जाएगा, या दे गेट वॉमिटिंग, दोस काइंड ऑफ सिम्टम्स विल बी सीन. If exercise continues beyond approximately 10 minutes, the bronchoconstriction supervenes, resulting in asthma symptoms. और इन लोगों में जनरली 10 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज हो जाए, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. कुछ लोगों में ऐसे होता है कि एकदम से हाई इंटेंसिटी पे चले जाए विदाउट वार्म अप एंड ऑल, दे विल डेवलप द सिम्टम. तो patient to patient variation can be there, so you need to assess them properly. Wheezing, what is wheezing? It's a musical high-pitched whistling sound produced by the airflow turbulence. That is one of the commonest symptoms is the asthma, which can be seen in the mildest form and only end expiratory. Initially वो expiration के end में ही होगा, but later on जब severity बढ़ती जाती है तो वो throughout expiration होता है और कई बार during time of inspiration भी होता है. शुरुआत होती है at the end of expiration. As the severity increase, it happens with the whole expiration and even at the time of inspiration. दोनों time पे होगा. During most severe episode, wheezing may be absent because of the severe limitation of the airflow associated with airway narrowing and respiratory muscle fatigue. जब सीवियर हो जाएगा अस्थमा तो वीजिंग टोटली एब्सेंट हो जाएगा. आप जब उनकी चेस्ट देखोगे कोई मूवमेंट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड ए साइलेंट चेस्ट. इसको साइलेंट चेस्ट कहा जाता है क्योंकि एयरवे उतने नैरो हो चुके हैं और रेस्पिरेटरी मसल उतना फटीक हो चुका है कि कोई भी टाइप का मूवमेंट नहीं हो रहा है. आप ना तो वहां पे पंप हैंडल देख पाओगे, ना बकेट हैंडल देख पाओगे, ना प्रिस्टन लाइक मूवमेंट देख पाओगे, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, पूरा चेस्ट साइलेंट हो चुका है. पेशेंट इज हैविंग सीवियर डिस्निया, नो wheezing is heard. That is in the extreme severe case. माइल्ड केस में एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन थोड़ी सीवियरिटी बढ़ेगी, ड्यूरिंग द होल एक्सपिरेशन wheezing will be seen, और सीवियरिटी बढ़ी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आल्सो wheezing will be seen, लेकिन एक्सट्रीम केस में टोटली एब्सेंट ऑफ wheezing will be seen. In exercise induced bronchoconstriction, wheezing may be present after exercise. In nocturnal asthma, wheezing may be present at the time of night. अगर किसी को अस्थमा नाइट टाइम पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नॉक्टर्नल अस्थमा, वहां पे रात को उसको अस्थमा व्हीजिंग होगा. एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है उसको एक्सरसाइज के बाद होगा. एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा दोनों टाइप पे हो सकता है, या तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज और आफ्टर एक्सरसाइज.
डिपेंड्स ऑन कितने इंटेंसिटी पे वो एक्सरसाइज करे उसके ऊपर से वो डिसाइड होगा. आई हैड सीन वन पेशेंट हु हैड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, जो एक्सरसाइज उसने स्टॉप किया और उसको अस्थमा हुआ. मैंने एक पेशेंट ऐसा देखा है. Cough may be another symptom of asthma, especially in case of exercise-induced asthma or nocturnal asthma. It is non-productive and non-paroxysmal. Non-productive मतलब कि dry cough. वो cough करेगा लेकिन कोई production नहीं है, कोई expectoration नहीं आ रहा. Children with the nocturnal asthma tend to cough after midnight and during the early hours of the morning. जिन जो बच्चों में अस्थमा होता है उन लोगों में ज्यादातर रात को कफ होता है या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे दे गेट कफिंग. Chest tightness can be seen in the severe cases of asthma with or without symptoms of other asthmatic symptom. और ये जनरली एक्सरसाइज इंड्यूस और नॉक्चुरल अस्थमा में सबसे ज्यादा ये सिम्टम्स दिखाई देंगे. Other symptoms in young children will be history of recurrent bronchitis, bronchiolitis, pneumonia, persistent cough with cold, और recurrent cough और chest rattling. Chest rattling, rattle मतलब कि घुघरो. छोटा बच्चा माटा अपने को घुघरो जे टॉय है, दैट इज कॉल्ड एज रैटल. दैट टॉय रैटलिंग टॉय. यहाँ पे जो बच्चों में जो अस्थमा होता है दे विल बी हैविंग रैटलिंग चेस्ट और चेस्ट रैटलिंग, क्योंकि चेस्ट से घर 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 आवाज आती रहेगी रात के टाइम पे. ये सबसे ज्यादा रात के टाइम पे होता है क्योंकि जब रात में सो जाता है तो ऑन दैट टाइम द सिक्रीशन गेट एक्यूमुलेटेड. द होल डे व्हेन ही इज वॉकिंग ही इज प्लेइंग द सिक्रीशन इज mobile, but when at the night time when he's sleeping secretion get accumulated at one place, और जब वहां से एयर पास होगा तो टर्बुलेंस डेवलप होगा और वो टर्बुलेंस रैटल साउंड क्रिएट करेगा. सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ रैटलिंग विल बी सीन इन केस ऑफ किड्स. Most children with chronic or recurrent bronchitis have asthma. जिन लोगों में अस्थमा होगा, जो बच्चों में अस्थमा होगा, they also have bronchitis or bronchiolitis, that is inflammation of the bronchioles. They are prone to develop pneumonia क्योंकि secretion accumulation होने के chances ज्यादा होता है. Cough with the cold, उनको कफ भी रहेगा, कोल्ड के सिम्टम भी रहेंगे, तो ये सारे इश्यूज रहते हैं. बच्चों में ये ज्यादा रहेगा और एल्डरली एजीज में भी न्यूमोनिया वो सब हो सकता है. Clinical presentation, if we see in physical examination, the National Asthma Education and Prevention Program, they highlight the importance of correctly diagnosing asthma, how the correct diagnosis need to be made. एक तो patient should have episodic symptom. It should not be continuous. COPD में continuous symptoms रहते हैं. अस्थमा में एपिसोड होता है, ये थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद पेशेंट विल बी टोटली फाइन. अगर वो नॉर्मल टाइम में आप उसका स्पायरोमेट्री चेक करोगे इट विल बी टोटली नॉर्मल. Airflow obstruction or symptoms are at least partially reversible. COPD is irreversible symptom. आप if you remember drug induced spirometry जब होता है, जब आप ड्रग देने के बाद चेक करते हो तो उसमें लेस देन 15% का चेंजेस आता है. सीओपीडी में, अस्थमा में मोर देन 15% का चेंजेस आता है. So that shows reversible symptom. Then exclusion of alternative diagnosis. Other diagnoses will be excluded, जैसे कि ILD, COPD, pneumonia, TB, all those diagnoses will be excluded. अगर कोई other diagnosis नहीं है तो आप अस्थमा कह सकते हो. Manifestation of acute episode. Acute episode में क्या क्या दिखेगा? It could be mild, moderately severe, severe और imminent respiratory arrest. Respiratory arrest में totally breathing stop हो जाएगा and immediately you need to go for the respiratory resuscitation. You have to calm down the patient with the medication और साथ में आपको पंपिंग करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पंपिंग भी नहीं कर सकते. एम्बुलेक डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो एयर फ्लो रप्चर हो जाता है. Mild episode. During a mild episode, patient may be breathless after physical activity such as walking. They can talk in sentence. They can lie down, and they may be agitated. थोड़े से restless दिखेंगे आपको. They can lie flat. माइल्ड सिम्टम में उनको सीधा सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी they won't be able to lie down in supine position. मतलब कि they are having orthopnea. What is orthopnea? Difficulty in breathing in supine position. Okay. If you get any doubt, write down in the message.
हार्ट रेट विल बी लेस देन 10 सॉरी लेस देन 100 बीपीएम, मतलब कि वो टैकीकार्डिया में नहीं होगा माइल्ड केस में. लेटर ऑन इट गोज इनटू टैकीकार्डिया. पल्सेस पैराडॉक्सिस विल बी सीन. इट इज एक्सेजरेटेड फॉल इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा. Moderate amount of wheezing will be seen if you auscultate the chest. Moderate amount of wheezing will be seen, which is at the end of expiration. As I told you, mild case में wheezing at the end of expiration होता है. Moderately severe case में respiratory rate increase हो जाएंगे. Tachypnea होता है, which is called as tachypnea. Accessory muscle will be seen. Use of accessory muscle will be seen. The supracostal, supraclavicular or intercostal retraction, nasal flaring, abdominal breathing, all these things will be seen, and heart rate will be 100 to 120 beats per minute, जो tachycardia range में जा रहा है. Expiratory wheezing will be there. Pulses paradoxes will be there. That at the time of inspiration, your blood pressure systolic will drop. That is called as pulses paradoxes. ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विल बी विथ रूम है, मतलब कि अगर विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट अगर आप उसका पल्स ऑक्सीमीटर चेक करोगे विच विल बी 91 टू 95%, मतलब वो कम हो रहा है. 95 टू 98 होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है. यहाँ पे 95 से कम हो रहा है, बी सैचुरेट हो रहा है, शुरुआत यहाँ से हो रही है. पेशेंट विल बी हैविंग सीवियर एपिसोड ऑफ ब्रेथलेसनेस व्हाइल टॉकिंग, मतलब कि इफ यू नो एनवाईएचएस स्केल, जहाँ पे लास्ट स्टेज होता है कि बात करते वक्त भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, दैट इज ग्रेड 4. दैट विल बी सीन ओवर हियर. इवन व्हाइल ईटिंग दे गेट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. Their cry will be very softer and shorter cry. See, if the kid want to cry loudly, he need to have a stronger respiratory muscle. लेकिन जब कोई बच्चा जिसको अस्थमा हो रहा है वो बहुत ही धीरे से रोएगा, वो लाउडली वो रो नहीं पाएगा, क्योंकि जितना लाउडली रोने जाएगा उसके रेस्पिरेटरी मसल तो ऑलरेडी फटीक हो चुका है, ही वोंट बी एबल टू डू दैट. In more severe cases, the patient assumes in sitting position, as that's what I told you, orthopnea. सीवियर केस में, माइल्ड मॉडरेटली सीवियर केस जब बनने लगता है तो वो सुपाइन नहीं सो पाएगा. ही टेंड टू बी इन अपराइट पोजीशन, उसी में सो जाता है. सीवियर एपिसोड में पेशेंट विल बी सीवियरली ब्रेथलेस ड्यूरिंग रेस्ट, इवन नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग, खाना नहीं खाएगा, जिसकी वजह से इन 10 minutes this lecture will get over. So after that we'll continue this thing in the next class. तो दे वोंट बी एबल टू ईट, दैट्स व्हाई वो लीन होते जाएंगे. जो सीवियर अस्थमा होता है इसीलिए वो लोग सब बहुत पतले होते हैं. दे टॉक इन द वर्ड्स रेदर देन द सेंटेंस, दे वोंट स्पीक द होल सेंटेंस, कुछ वर्ड्स में ही बात करेंगे. एंड दे आर एजिटेटेड, रेस्टलेस रहते हैं. Severe episode, the respiratory rate will be often more than 30 breaths per minute. Use of accessory muscle will be there. Suprasternal retractions are common. We seen over here. Okay. Yeah. So till now, any doubt? No, sir. Okay. ठीक है. So go through that e-medicine. Sir. क्या 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 Did you say anything, Tanu? Yes, sir. आपने कुछ बोला? नहीं sir. Okay. Yeah. So go through e-medicine. वहाँ पे आपको क्लिनिकल पार्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा. अभी जो असेसमेंट में बाकी का पार्ट है that we'll see in the next class. Okay. सर ये बहुत लेट हो गया नहीं आज? क्या 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 सॉरी सर, पर है ना ऐसे बहुत लेट हो गया था, 10 बजे हम हाँ तो मत अटेंड करो, कुछ नहीं. नहीं अटेंड करना है. मैं सर ऐसा record थोड़ी करके ना मैं बोला. लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप I'll send ऐसे it to क्यों you. आंसर आप? नहीं मतलब दैट्स व्हाट ना, अगर आपको लेट हो रहा है तो यू कैन स्लीप. ओके, क्योंकि मैं भी मेरा काम खत्म करके मैंने अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया है. आपको इतना लेट हो रहा है तो यू कैन स्कीप द लेक्चर. मैं रिकॉर्डिंग करके मैं भेज दूंगा ग्रुप में. मैंने ऑलरेडी ये रिकॉर्ड किया हुआ है, तो दैट्स नॉट एन इश्यू. और ओके इवन सर. कोई नहीं आएगा तभी आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर एंड देन आई विल सेंड इट टू यू. जब अगर मैं कॉलेज में लेक्चर नहीं ले पाया तो आई विल डू इन दिस वे. I'll record the lecture and then मैं by 9:30 और 9 o'clock, आज मुझे लेट हो गया मेरे विजिट में,
बाय दिस टाइम आई विल सेंड द लिंक, अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर एंड सेंड इट टू योर ग्रुप। डाउट नहीं है ना कोई? डाउट है या नहीं है? ना ना सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो बाकी का हम नहीं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है।